Okay, now in D1 chart, how many planets are aspecting this? Okay, in which planet is conjunct with this sun, that can modify the result. Are you getting me? So if I'm saying sun is a benefit, sun is just a benefit. Whether it's a powerful or weak, that is a different subject that you can see through Shadwell and other factors. Okay, now this benefit moon. Now in this chart, sun is with Saturn, with Mercury in Sagittarius sign. Saturn is a malefic in this lagna. So that sun is a benefit by default through Saptavarga. Okay, now you can see the same thing for Saturn also. See the Saturn Varga, and that will give you the complete picture whether Saturn is a benefit or malefic. Please, sir, maintain. Okay, aside in same manner you can see the Mercury also, and then you will get the complete picture of that lagna. That's why whenever you see like these three planets, Sun, Mercury, Saturn is in lagna. For some people, this same combination can give malefic result, but for some people, this same combination can give benefic result also. Okay. Now, what is the criteria that is making this difference? Through Saptavarga, you can get the complete picture. In my chart, in Lagna also, I have Dhanu Lagna, and all these three planets are in Lagna. Okay. Maybe some other person also have the same combination, but for him, it can create trouble. It can give many malefic results. But for me, this same combination is giving very good result. Okay. Because mine Saptavarga combined result is different from him. Are you getting me? So through this, you can get the complete picture of that planet. Same thing you can apply to house also. Okay. Now this house-wise benefic malefic calculation, I am not supporting this thing. Okay. But still, you can try it. Now, how house-wise you can see? House-wise means first house. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, हाँ जी. सर, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे सन अभी वेनस का साइन पे डेबिलिटेटेड होता है, लेकिन सप्तवर्ग में अगर मान लो सातों वर्ग में वो वेनस के साइन में आ गया और लियो में लिब्रा में आ गया, तो वो तो डेबिलिटेटेड हो गया, लेकिन वो सुबह मतलब बेनिफिक वर्ग में हो गया. तो जैसे पराशर ने पहले ही कहा है कि अगर लग्ना चार्ट में वो एक्साल्टेड है और D9 में अगर डेबिलिटेटेड है तो डेबिलिटेशन ही इफेक्टिव होगा. देखिए वो जो आपने बोला ना, वो स्टेटमेंट पूरा नहीं है. दैट इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, है ना. पराशर ने ये तो बोला कि ठीक है, वो एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन बोल दिया कि मान के चलिए कोई ग्रह सूर्य को ही मान के चलते हैं, अगर वो तुला राशि में है नवमांशा में, ठीक है, बट लग्न में वो अच्छी पोजीशन पे है, लग्न पे मान के चलते हैं कि वो एक्सॉल्टेड है और वहां जाके वो डेबिलिटेशन हो गया, तो डेबिलिटेशन को आप मानेंगे. तो सूर्य का मिक्सचर होगा, डेबिलिटेशन. हाँ, सही पढ़ा है आपने, बट उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि वो सूर्य मतलब उनके लिए मेलेफिक होगा कि बेनिफिक होगा. करेक्ट. ठीक है, तो वो मेलेफिक बेनिफिक हमने खुद बना लिया अपने से, है ना. वो बात तो सही है कि वो मेलेफिक हो गया तो हम लोग वो मेलेफिक कह रहे हैं, वो डेबिलिटेड हो गया तो हम लोग उसको नीच का मानेंगे, नीच की प्रबलता ज्यादा है. बात तो सही है, बट वो नीच की प्रबलता क्या उसको मेलेफिक ही देगा? आप श्योर हो? या किसी बुक में ये कहीं भी लिखा हो कि मेलेफिक नेगेटिव करता है? ऐसा नहीं होता. ऐसे या बिल्कुल सही कह रहे हैं. ऐसे कई चार्ट्स हैं, जैसे इवन तेंदुलकर के चार्ट में कुछ जुपिटर या कोई एक और प्लैनेट्स हैं जो नवमांशा के अंदर डेबिलेशन में है, बट दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट बिकॉज उसी दशा के अंदर उसने बहुत अच्छा राइज किया. अब देखिए नीरज जी, मैं आपका भी यहाँ पर ना जवाब देता हूँ. उसमें क्या है, सचिन की कुंडली में अगर वो नीच का हो जाता है, ठीक है, नवमांशा में, तो
वो उसकी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस लेके आएगा। वो अपनी प्रोफेशन की वजह से इतना ज्यादा एंगेज रहेगा ना, अपनी वाइफ को टाइम ना दे पाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएंगी उनको, जो जो आप नहीं जानते होंगे, है ना। तो वो काम करेगा डेबिलिटेशन वहां पर, ठीक है, बट वो पर्टिकुलर उस वर्ग में काम करेगा। अब जैसे जैसे मेरे भी कुंडली के अंदर सन लियो में है D1 में, और D9 के अंदर जाके वो लिब्रा के अंदर 21 डिग्री में चला जाता है। डिबिलिटेशन से थोड़ा दूर है, बट एग्जैक्ट डिग्री से, बट डिबिलिटेटेड माना जाएगा, और 9th हाउस के अंदर। सो अब ये किस तरह से रिजल्ट करेगा? अब मेरे को ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो नेगेटिव रिजल्ट देगा तेरे को। नहीं, ये देखिए, इसीलिए मैंने शुरू से अभी तक ना, मैंने वर्ग कुंडली नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ वर्ग। उसका कारण था, है ना, जब हम वर्ग बोलते हैं ना, तो हम सिर्फ उस लाइफ, उस एरिया की हम लोग बात करेंगे, उसको लेके पूरा कंप्लीट जजमेंट पे नहीं आना है आपको, है ना। अगर आपका नवमांश कुंडली में वो नीच का जा रहा है ना, तो आप नवमांश में आप क्या देख रहे हो? कोई पर्टिकुलर एरिया देखते हो ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग मैरिड लाइफ देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो रिजल्ट आपने मैरिड लाइफ में अप्लाई करेंगे। अब बिल्कुल जैसे वो बोलते हैं कि भी वो सूर्य जो नेगेटिव हुआ है D9 के अंदर जाके, वो फादर को बड़ा दिक्कत करेगा। बट मेरे फादर को कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की भी, फर्स्ट क्लास अच्छी लॉन्ग लाइफ है, सब कुछ है, सब कुछ मतलब राइज किया है, सब कुछ किया है। तो नीच का हो जाना दिक्कत करेगा, वही तो मैं बता रहा था। देखिए, नीच को जरूरत नहीं कि दिक्कत करेगा, है ना। वो डिपेंड, उसकी देखिए, उसकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसकी पावर में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सेम एंगल में, अभी जैसे क्या ना, नवमांश आपका आपका लग्न क्या बनता है? मेरा लगन है कुंभ। मैं अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरा डेविलेशन होने के बावजूद मेरा जो सन है वो आत्मा कारक है, और वो हाईएस्ट डिग्री पे है। मतलब उसका अगर शेड्यूल भी देखूं तो शेड्यूल भी सबसे ज्यादा उसी का नंबर 1 पे है वो। अब ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि भी D9 में जाने के बाद वो डिबिलिटेशन के बावजूद वो सबसे ज्यादा शेड्यूल है उसका। तो अभी क्या होगा ना, जैसे आपका अब मुझे वो बात समझ में आई आपकी जो आपने अब करी। तो इसीलिए क्या होगा ना, कि आप वो कॉन्सेप्ट को ना पूरा पूरा समझेंगे इसमें। ये जो वर्ग कुंडली की हम बात करते हैं ना, तो वो वर्ग आपके जीवन के स्पेशली एक वर्ग की बात हो रही है। तो यही सूर्य आपके मैरिज में एक अलग तरीके से बिहेव करेगा, यही सूर्य आपके करियर में अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, यही सूर्य आपके फाइनेंशियल लाइफ में अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो तो कुछ ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो सर इसमें जैसे जैसे शनि है वो नवांश में अगर नीच का हो गया, तो फिर हम क्या उसको, क्योंकि शनि मतलब जो है शादी से शनि का कोई वो नहीं है, या फिर उसको कैसे कंसीडर करेंगे? अब वो कंसिडर कोई एक लाइन में इसका आंसर नहीं है, क्योंकि डीवी देखने के बाद फिर आपको उसको D1 में फिर चेक करना पड़ेगा। वो जो साइन है, जहाँ वो D9 चार्ट में, जैसे इनकी कुंडली में, नीरज जी की कुंडली में ही D9 में वो नीच का हो गया, तुला राशि में है। इनकी कुंडली में तुला राशि पड़ती है सप्तम में, 7th हाउस, तुला राशि 9th में, 9th में गया, सॉरी 9th में गया, ठीक है। तो वो अब नवमांश में मैरिज के साथ साथ कोई ऐसा एलिमेंट भी हम देखते होंगे ना जो 9th हाउस से कंसर्न हो, है ना, वो एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगी इनको बस। सर D9 में 7th में है, D9 में हाँ तुला राशि कहाँ है मेरी? D9 में आप हाउस छोड़ दो। हाँ अच्छा, D9 में हाउस छोड़ दो, D9 में हाउस लेना ही नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे 9th में पड़ती है सर तुला राशि। हाउस आपको देखना है लग्न में। हाँ लगन में हाउस जो है मेरा 9th है सर। 9th में, ठीक है। वो जो नीच का जो रिजल्ट होगा ना, वो आपको 9th हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेगा, जो वो गड़बड़ करेगा। 9th हाउस में भाग्य भी होता है, 9th हाउस, इसीलिए लोग आपसे बोलते हैं कि आपके फादर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं वैसा कुछ है नहीं, तो 9th हाउस में जरूरी ना फादर, और भी चीजें। हाँ तो 9th हाउस का मैं अगर शेड्यूल देखूं वो कम है। अब आपको वो थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा ना। हाँ मतलब मुझे थोड़ी क्लैरिटी आई सर इससे, है ना। So I will repeat same thing in English. So here we have confusion like how to see the Varga basically. Okay. So for Varga chart, see, I am using very simple concept. Maybe some people are not agree with this. Maybe some are comfortable with this, but this is the truth. Okay. If you read any classical book, no classical is talking about divisional chart. They are only talking about divisions. Okay.
In modern texts, in modern books of Jyotish, we have divisional charts. In softwares, we have divisional charts. If you read Saravali, if you read BPHS, Baldipika, Brihat Jatak, you will not see any divisional chart. They are talking about Varga only. Okay, Varga means divisions. Divisions of what? Divisions of 30 degree of sign. Okay, so by looking into your degree of every planet, you can understand the Varga of that planet. Okay, it means like in this example, let's say Saturn. Saturn is in Sagittarius sign 10 degree 22 minutes. Okay, now only by this sign and this degree, you can understand the nature of Saturn in every area of your life. Okay, you have to understand the same Saturn in Lagna is impacting on every area of your life. Okay, maybe you can think Saturn is in Lagna, so Saturn will impact only to my head or to me because Lagna is you, and Saturn is impacting your third house. Why? Because Saturn have third aspect, and third house is also ruled by Saturn. Second house is also ruled by Saturn. So it means Saturn can give only result of Lagna, first, third, second, and third. Also, Saturn is influencing seventh house through seventh aspect. So we can say yes, Saturn can influence your marriage life. Also, Saturn have 10th aspect, so it can also influence my career. This is what we are doing. Okay, but this is not a complete assessment. You have to understand Saturn can give result in every area of your life. Okay, in this chart, Saturn is not influencing fourth house. Let's say Saturn is not influencing the fourth house. ये तो मेरी चार्ट है नीरज, तो मेरी चार्ट दिखाई जा रहा है दोस्तों, वही सोच रहे हो कि चार्ट जाना पहचाना क्यों लग रहा है जब से। ये आपकी चार्ट है? हाँ, हम चेंज कर रखा, मैं तब से दिए जा रहा हूँ, लग रहा है चार्ट देगा सो लग रहा है, चार्ट मेरा ही चार्ट दिखा रहा है। नहीं सर, एक बार आपने कहा था, कुछ एग्जांपल दे रहे थे, तब किसी ने कहा था कि शनि और सूर्य आपके ही चार्ट में लग्न में है, तब मुझे भी याद आया कि ये सर की तो नहीं है, लेकिन मेरे पास किसी और नाम से सेव किया हुआ था, मुझे लगा कोई होगा, मैंने बोल दिया। अभी मैंने देखा ना रेट्रोग्रेड जुपिटर 6 में, ये चार्ट में देखा सा लग रहा है। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से in this chart Saturn is not connected by any means to the 5th house. Okay, this doesn't mean Sun is not involved in any affair or any kind of event related to 5th house. It can give the result of 5th house also, because in Dasha Antar Pratyantar Saturn is operating at any time. Okay, so it can give the result, it can influence the result of 5th house. But how? So we have D5 chart. We know a D5 chart. Okay, so through this degree of Saturn, 10 degree 22 minutes, we can go and check the Varga of 5th. We can divide it in 5 Vargas, no? So that we can get the divisions of 5th house. Am I right? So that influence of Saturn you can feel whenever you see the result of 5th house result, concerned result. Like for example, let's say Chandra, Moon. Okay, D3 chart, Dreshkan chart. Dreshkan chart have many. In Dreshkan chart, we can see the brothers, sisters, okay, strength, and many other factors. But you can see here, Moon in D3 in Dreshkan, it's in Leo. It's falling in the Leo sign. Am I right? Can you all see it? Moon in D3 chart is in Leo sign. Yes. Okay, so it means whenever Moon operates, it can give the result of Leo sign, especially regarding my brother, sisters, and all. So it means this Moon and this 9th house,
can impact my brothers and sisters. But ninth house is not directly connected with third house. Okay, that's why sometime you will feel whenever you are judging the horoscope, you will see your Jupiter is not connected with 10th house, but still this person is getting a good job in Jupiter. Antardasha, Pratyantardasha. So what you are missing? You have to check Jupiter's Varga, Dashamsha Varga. Dashamsha Varga, check Jupiter Dashamsha Varga, and that Varga sign check in your D1 chart. Maybe that particular house is operating this year. That particular house is operating this year. So that can give you the clues. Jupiter's working in your professional life. Okay. ओके हिंदी में एक बार Like I will show you. See here. This year my ninth house is activated. Okay. So in my ninth house, yes, you can call it Amshutulya Rashi. See the concept which I am teaching you. If you want to read more about this, you can read the Navamsha in Astrology, C.S. Patel this book. That is talking about Navamsha Tulya Rashi, Rashi Tulya Navamsha, like this. हाँ उसमें बड़ा क्लियरली दे रखा है उसमें. Clearly मिला है उसमें, है ना? बट मैं हाउस कंसिडर नहीं करता हूँ डिविजनल चार्ट में. तो वो जो एक रिवर्स थिंग है ना, वो शायद वो राशि तुल्य नवमांश वाला या नवमांश राशि में एक में मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, बाकी काम करता है सही है. ठीक है. तो अभी इस साल आप देखिए, दिस ईयर माय नाइन्थ हाउस इज एक्टिवेटेड. सो नाइन्थ हाउस हैव लियो साइन, केतु. Okay, let's talk only about these two parameters, Leo sign and Ketu. Okay, Leo sign is ruled by Sun and we have Ketu. So by using only these two planets, you should able to predict at least 10 events. Okay, now you will check the transit and all and all. You don't need transit and other things. At least on the first level. What you can do is just check. Leo sign is ruled by Sun. See Sun. Sun in D10, it's falling in Capricorn sign. D10, it's falling in the Capricorn sign. Okay. Now see, Capricorn sign is my second house. Okay. So whenever my ninth house activates, it can give me financial gains. Is it making sense? Okay, it can give me financial gains. At least something related to second house that is connected with the profession. ये सॉरी ये दशांश ही क्यों, ये दशांश D10 ही क्यों पकड़ा हमने? I am talking profession ना. अच्छा, for profession, ठीक है. And the same thing you can check in Ketu also. मतलब जो गेन देगा वो प्रोफेशन से रिलेटेड गेन देगा फाइनेंशियली, मतलब इंक्रीमेंट वगैरह, बोनस वगैरह जो भी है बेसिकली, या प्रमोशन. इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, बट या समथिंग लाइक दिस. विनायक जी, मैं एक चीज पूछ रहा था कि जैसे अभी कैप्रिकॉर्न D10 में जिस जहां पर पड़ता है, मतलब वहां पर भी जिस हाउस में पड़ता है, तो वो हाउस कंसिडर नहीं करेंगे? वो नहीं करता मैं कंसिडर, एटलीस्ट मैं नहीं करता. अच्छा, ठीक है. और ना मैं सजेस्ट करूंगा कंसिडर करूंगा. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. मतलब उसको हम D1 में लेके आए, वहीं देखें. उसको D1 में लेके आएंगे. ओके. जितने भी चंद्रकला नाड़ी के जो टेक्निक्स हैं जी, है ना, वो सब ऐसे ही काम करते हैं. वो उसमें बोला जाता है कि ये इवेंट होता है जब सैटर्न चंद्रमा के त्रिकोण में आता है नवमांश में. जी जी. तो हम क्या करते हैं ना कि हम वो शनि का गोचर देखने लगते हैं नवमांश के ऊपर. वो गलती है, ऐसा नहीं होता. वो नवमांश की राशियों को आप देखोगे D1 में गोचर देखना है. गोचर D1 में हो रहा है, ना कि नवमांश में. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना. बिकॉज
you can see in divisional chart, in some divisional chart, you can see Rahu and Ketu in same house. True. Rahu and Ketu can fall in the same house. Yes. Yes, sir. Okay. Now tell me, is it a logical thing? Rahu Ketu can fall in the same Rashi. Is it possible? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक. In same house, it can never fall. वो हमेशा उससे 7th house में ही रहना है ना राहु केतु को. Then how in divisional chart it is coming in the same house? If you see D30 chart, D20 chart, and in any other higher divisional charts, you will see this Rahu Ketu is falling in the same sign, same house. Okay, then how will you check the gochar in divisional chart? Okay, so that is a mathematical error, na? So if you make divisional chart, then you will fall in this kind of trap. Okay, so simple is just check the degree of planet and see in which varga, or at least go and see divisional chart in which house, in which sign, sorry, not house, which sign it is falling, and take that sign and check it in your D1 chart. Now in your D1 chart, check transit on that particular sign. You will see the result. Simple. Okay. So now understand this concept and go and now read the books which is talking about divisional chart. You will be able to understand the whole concept. Okay, what exactly Rishi is talking about. Okay. So which book you recommend on divisional charts? See, all classical book is correct on divisional chart. Okay, but the problem is the interpretation. How they are interpreting it. They are interpreting in terms of houses, but houses is not a correct thing. Na? How you can't make the house. If you, that's why till now we have problem with Nadi Amshas. Nadi Amsha chart we have in this Jehora also. So you will see Rahu, Ketu and all these things are falling in the same houses and also it will create a lot of confusions. Correct. Okay, so simple thing is use divisional charts just to see this sign and then take that sign in D1 chart. Simplest method of checking profession or childbirth event and all. See the 5th house in your chart, see where Jupiter is sitting, okay, where 5th house Lord is sitting, and check where 5th house Lord in which in D7 chart which sign 5th house Lord is going, and consider that sign in D1 chart. Simple. Now note down these houses in D1 chart. That's it. Whenever Jupiter transit in these houses, childbirth will take place. Simple technique. Now you will see the same technique in many variations. Sir, can you just repeat that technique again? आपने जो बोला, the last line. Yeah, this is not a one technique. You can make it 1,000 techniques. Okay, but understand the base of this technique. Yeah. What I am saying is, let's say this is a 5th house. Okay, Moon 5th house. Mars is sitting in the 4th house. Okay, 5th house, 4th house. Now we have Karaka planet Jupiter, 6th house. Okay, Jupiter is in 6th house. We have these three houses. Now check whether Mars in D7 chart, which sign? In D7 chart, Mars is in Capricorn. Okay, Capricorn sign is the 2nd house. Capricorn sign is 2nd house. Okay, so whenever Jupiter transit either in Capricorn or in Pisces or in childbirth is that. Okay. Now this year Jupiter is in Capricorn.
तो खुशखबरी है इसका मतलब। खुशखबरी हो चुकी है। अच्छा, मतलब क्लिक, तो ठीक है। so whether Jupiter is in Capricorn or in Sagittarius, in both conditions we can have a childbirth in the chart. Why in Sagittarius? Because if Jupiter is in Sagittarius, that will aspect the fifth house. But there is sign. If it's go to second, then also we have possible. This is a transit rule. Okay, this is a transit rule. But before applying this technique, you have to check na this year which house is activated. Okay, and if you see the childbirth in that particular year, then apply this transit rule. Okay, so now when you use the Sudarshan Chakra, you have to apply the same principle. First, you have to check in Lagna which house is activated. Okay, now that house activated will give you the all possible events. Sir, you told no that ninth house is activated, that is Leo. Then how Leo is related to childbirth, sir? No. See, Leo sign activated, ninth house activated. Okay. Okay. Now see, in ninth house we have Ketu. Ketu is aspecting fifth house or not? Oh yeah, correct. Ninth aspect. Okay. So these rules always work. Okay. So only thing is you need to check in every angle. See, in every house we have limited factors. We have sign, we have planets. That's it. Okay. Only consider these two things. And by using only these two things, you can connect many other houses. This is what we are studying in our easy predictive course. If you are from the easy predictive course, you can understand. That's why we are seeing the connection of houses and houses, connection of planet and houses. This is the whole game. If you able to decode the connection between houses and planets, you can predict any event. So, सर उसमें ये यस बोलिए। हाँ सर, उसमें आपने बताया था कि कि जैसे ये कैप्रिकॉन डिविजनल वर्ग में अगर जो कैप्रिकॉन को हमने लिया तो सैटर्न भी लेंगे ना जुड़ा हुआ, जहाँ शनि बैठा है उसकी प्लेसमेंट उस हाँ वो भी लेंगे। हाँ वो भी लेंगे ना, सैटर्न भी तो है ना जुपिटर के साथ ही है, वो भी लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब भी हम बोलेंगे हाउस लेंगे तो साइन तो लेंगे ना, साइन करा जाएगा उसमें। आप डिविजनल चार्ट सब साइन ही तो लेके आ रहे हैं आप वहाँ पर, हाउस थोड़ी लेके आएंगे। हाउस तो यहाँ बनते हैं लग्न कुंडली में, वहां से खाली आपको साइन मिल रहा है, साइन का रेफरेंस। वो कैप्रिकॉन साइन को हम लगन में लाएंगे और उसका लॉर्ड जहाँ बैठा है वो भी कंसिडर होगा, जुड़ जाएगा। ये तो हमने इजी प्रैक्टिस में करा था ना। जी वही सेम चीज यहाँ पे लग रहा है। सर इसको पूरा जितना आपने बताया वो थोड़ा हिंदी में बता सकते? नहीं, इसमें कुछ मैंने भी नया नहीं बताया, वही जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको, वही जिसमें बता रहा था कि डिविजनल चार्ट्स में वर्ग कुंडली आप देखेंगे तो वहां तक खाली साइन को पिक करिए और उसको लगने में लाके लगाना और वहां चेक करना, वो चलना। ओके, ऑल्दो अभी हमको सुदर्शन चक्र के लिए डिविजनल चार्ट का इतना प्रयोग नहीं है, ठीक है, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जानना चाहिए, मैंने जस्ट आपको क्लियरिटी दी है, ठीक है। फॉर सुदर्शन चक्र सिस्टम वी डोंट नीड डिविजनल चार्ट्स, ओके, so that's why don't worry to see the D9 D1. We are using this Saptavarga only to judge the malefic and benefic nature, that's it. Okay, if you go and read the Sudarshan Chakra chapter, you can understand this concept that is mentioned in our BPHS Saptavarga system, using the Saptavarga system to judge the auspicious and inauspicious nature of planets. सर वो आपने अभी सप्तवर्ग का जो पहले बताया था ना बेनिफिक, उसको आपने हिंदी में वापस नहीं, जैसे सूर्य लग्न में बैठा है तो हमने ये देखा कि सप्तवर्ग में वो बेनिफिक 4 में बेनिफिक आ रहा है तो लगभग वो मतलब ऑलमोस्ट वो बेनिफिक ही होगा, लेकिन उसके साथ में
सैटर्न है, मरकुरी भी है, तो ये हाँ, सब तो ऐसे 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 करके अब सैटर्न और मरक्यूरी का भी निकाल लोगे आप, बेनिफिक और मेलेफिक। उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सैटर्न मरक्यूरी दोनों ही मेलेफिक निकले, सूर्य अकेला बेनिफिक है, तो फिर मजा नहीं है, तो सूर्य को दिक्कत होगी। तो उस हाउस से रिलेटेड है मेलेफिक रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे आपको। जिस हाउस को सूर्य ऑन कर रहा है और बैठा है, दोनों से। आई विल एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, है ना, मैं इसको एक बार समझाता हूँ हिंदी में इस बार पहले, फिर इंग्लिश में। ठीक है, first let me explain this in Hindi, then I will repeat in English also. Okay, I am explaining the same thing, how to judge malefic and benefic, once again in Hindi first and then in English. Okay, let's take another planet. Let's take the Venus. Okay, Venus. Now I think everybody is ready with pen and paper, so you can write it down. We have Venus here. So in D1 chart, Venus is in Scorpio sign. So Venus, what you will say, malefic or benefic? Malefic. Malefic, one malefic. Malefic, yes, malefic. In D9 chart, it's in Virgo. Malefic or benefic? कंडीशनल होता है, क्या मानेंगे इसको? मरकरी अभी बेनिफिक, फिलहाल इसको बेनिफिक लेके चलो। बेनिफिक लेके चलेंगे, ठीक है। So till now we have Venus, one malefic, one benefic. Okay, and now see D2 chart. Venus is in Cancer sign. बेनिफिक, Benefic. Now D3 chart. Venus is in Scorpio again. malefic, Malefic. Okay. In D7 chart, Gemini. बेनिफिक, In Aquarius. malefic. I updated my glasses. So overall, how many malefic, how many benefic for Venus? D30 रह गया, I guess. Yeah, D30 रह गया. Sorry, D30 in Virgo. Benefic. Okay, now tell me overall, how many benefic Vargas and how many malefic Vargas? Four benefic, 3 malefic. 3 malefic, 4 benefic. So overall, Venus is benefic for me. almost. Okay, 12th house Venus is benefic. So I am happy. Okay, so like this, for every other planet you can see. So let's take another example. I will repeat the same thing in English with other planet. सर वो कंजक्शन में कैसे, हाउ दे विल बिहेव, टू मैलेफिक वन बेनिफिक, देन हाउ दैट प्रॉपर्टी विल कंजंक्शन में क्या करेंगे ना, जैसे अभी यहाँ पर क्या सन मरकरी सैटर्न 3 कंजंक्शन है। हाँ, ठीक है, सूर्य का अलग निकाल लेंगे, हाँ, सबका मरकरी का अलग निकालेंगे, सैटर्न का अलग निकालेंगे। हाँ, अब मान के चलिए कि सूर्य का आपको मिला बेनिफिट जो है इसमें। ठीक है, मरकरी सैटर्न का मान के चलते हैं कि मेलेफिक आ गया। ओके, तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि सैटर्न मरकरी दोनों मेलेफिक हो गए, सन अकेला बेनिफिक है। ओवरऑल जो लग्न से रिजल्ट मिलनी है ना, मेलेफिक रिजल्ट ज्यादा मिलेगी। ओके। और यहाँ पे अगर सैटर्न मेलेफिक होता और मरकरी बेनिफिक होता सप्तवर्ग में, तो सर वही परसेंटेज बेनिफिक हो जाएगा। ठीक है, सो let's talk about Saturn now. This time I will do in English. विनायक जी, वन क्वेश्चन मैंने बिफोर यू मूव टू सैटर्न अगेन, तो उसमें ये कि जैसे अभी हमने इसको जो इसके अंदर हम मेलेफिक बेनिफिक के अंदर मरकरी और मून है, तो मरकरी और मून के लिए वी विल यूज सम कंडीशंस और हम उनको बेनिफिक ही कंसीडर करेंगे। अभी फिलहाल बेनिफिक लेके चलेंगे, बट उसका कोई लेयर भी है आगे। हाँ, आगे लेयर ये होगा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो नेचर चेंज होगा। तो कंडीशन मतलब क्या कि पहले हम अभी क्या होगा ना, देखिए अभी पराशर जी ने ऐसे कोई कंडीशंस की इसमें बात नहीं करी है। ठीक है, तो अभी हम इसलिए मैं आपको ना पूरा जो एज इट इज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट इसका नेक्स्ट लेवल ये होता है कि वो ग्रहों का नेचर भी चेंज होगा एज पर योर असेंडेंट। ओके, लाइक यहाँ पर हम लोग स्कॉर्पियो साइन को मेलेफिक ले रहे थे। ठीक है, बट अब इस लग्न में स्कॉर्पियो मेलेफिक है कि बेनिफिक है मेरे लिए? नहीं, लग्न के हिसाब से तो मेलेफिक है। मेलेफिक हो गया ना, तो मेलेफिक लेंगे। बट अगर यहाँ एरीज होता तो मैं बेनिफिक लेता।
हाँ एरीज होता तो बेनिफिट था, राइट. but वो that is the next layer. Okay, but don't use that thing for now. Okay. Okay, but you can keep it in your mind. This is also one technique, but don't use for now. Use a general analysis for this. Okay. So the kind of a result you are expecting that you can derive from this one. बट अब लेकिन अगर उसको डीप एनालिसिस में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमें कैसे उसको लेना है. ओके ओके राइट. थैंक यू. Now let's do the analysis for Saturn this time. Okay, we have done the Sun. Sun is becoming benefic in this chart. Now see the Saturn. Saturn, Sagittarius sign, benefic. In D9 chart, it's in Cancer, ruled by Moon, again benefic. In D10 chart, Pisces, benefic. In D2 chart, Leo, malefic. D3 chart, Aries, malefic. D7 chart, Aquarius, malefic. D12 chart, Aries, malefic. And D30 chart, Sagittarius, benefic. So we have 4 benefic and 3 malefics. Am I correct? Yes, sir. Yes. Yeah. It means in this chart, Sun is benefic, Saturn is also benefic. Overall, we have 2 planets benefic in conjunction. Okay, now you take all 1 minute and try to do the assessment for Mercury and Moon both. Okay, in chat box just write down Mercury, how many malefic equal to वो benefic है कि malefic है, ये लिख के just write a one message and press the enter button. In single message, do the assessment for Mercury and Moon and type it in chat section. I will back in 1 minute and do the assessment for Mercury and Moon.